अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू पाकिस्तान, ये है हमारे शो का नाम। एंड वेलकम टू पाकिस्तान, basically we have one foreigner and some travel enthusiasts on the show. Travel enthusiasts can be people who are promoting Pakistan on their blog sites. They could be bloggers and they could also have travel companies. Today's speciality is that I have two travel enthusiasts on the show and one foreigner. The foreigner is from Kazakhstan, a very interesting place. A lot of people in Pakistan hear about Kazakhstan, but they don't know much about this place. So we're going to find out from Bagila Abu Yeva. I hope I'm pronouncing it correctly. Assalamu alaikum. Hello, how are you? Walaikum salam, thank you. Well, I see you can speak some Urdu. Yes, so and इस साइड पे मेरे साथ हैं ट्रैवल एंथुजियास्ट। तो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इनका पैशन था और उन्होंने अपनी ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की। द मैड हार्टर्स एंड एडवेंचर ट्रैवल के नाम से इन दोनों की कंपनी है। अनीका अली इज़ फ्रॉम द मैड हार्टर्स एंड अहमद नासिर इज़ फ्रॉम एडवेंचर ट्रैवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you for joining in. Thank you for coming in. And I'm very excited to talk about these interesting companies that you've created, the Mad Hatters and Adventure Travel. Pakistan में इतनी डिमांड हो गई है that I am actually excited to talk about the fact कि लोग कितना आना चाहते हैं पाकिस्तान में। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही थी और ये ख़ास बता रहे थे कि बहुत सारे अमरीकी और यूरोपियन लोग जो हैं वो आते हैं पाकिस्तान, यानी इतनी दूर से आते हैं, इन्हें कांटेक्ट करते हैं और सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से ये काम आसान उनके लिए भी हो गया, इनके लिए भी, क्योंकि राब्ते आसान हो गए। Well, so let's start our discussion with Bagila. Bagila, how long has it been since when you moved to Pakistan? It's 1.5 years now. A year and a half, not too long. Yes. And I see you totally clad in Pakistani clothes. Yes. You're loving it. And right? I love the Pakistani outfit, yes. Right. Exactly. Well, Bagila se discussion continue rahegi because there's so much more that I also want to find out about Kazakhstan. But I'd like you to go and take a look at this report that we've prepared on Kazakhstan and see what Kazakhstan is all about, and the rest we'll find out from Bagila. सेंट्रल एशिया में ये मुल्क बेस्ड है। इसका एक बॉर्डर रशिया से लगता है, एक साइड से चाइना से। क्या क्या इन्फ्लुएंस आता है कज़ाकिस्तान में रशिया का, चाइना का, और उससे पहले जो यहाँ पे लोग आते जाते रहे? बिकॉज यू सी Bagila was just talking about the fact that one border touches China of Kazakhstan, one side touches Russia. So what are the influences from these two places that we see in Kazakhstan? As you know, Kazakhstan in past was part of USSR, so mostly it's influenced by Russia, and we have
So is there some Chinese influence also, given you touch a particular part of your border touches with China? Yes. You do? Exactly, yes. In terms of culture, do we see some influence there? The cuisine, I can say. Oh, really? Yes. So you guys know really, what Chinese food is? Yes, exactly. Right. So, and what about the Russian influence? Yes, of course, it was a part of the USSR at one point, but what kind of Russian influence, again in terms of culture, do we see in Kazakhstan at present day? Russian language is considered as one of the official languages in Kazakhstan, and most of the people speak Russian language. And about the culture, mostly we are Muslims, yes. but still yes. we do follow some traditions yes, from the past. Yes, exactly. Such as like people don't bother a lot about what others say about the relatives, for example. Right. And mostly so you do share some common traditions. Yes, exactly. With the Russians still, though it's a Muslim state. Yes. Right. So how difficult or easy it was for you to adjust in Pakistan, given you come from a Muslim state into another Muslim state, but obviously culture and traditions are different. Totally different. So how was it for you to adjust in Pakistan? I think it was very easy, thanks to my husband. He gave me a lot of big support. So and I see a lot of Pakistanis always try to understand and see, even if you are from other country, they how to say. So they were very warm and welcoming, I believe. Yes. Right, and I see you've adapted to our traditional dress very easily and comfortably. Yes, I love. So I love shalwar kameez. Did you have any idea of Pakistan when you lived in Kazakhstan? I mean, what the country was about, what we were like? Mostly a lot of negative things I used to hear. Right. But when I came here myself, I realized that it's totally different from it was portrayed on the media. I'm happy to hear that, because you see, normally what's projected versus what the reality is, it's different. Pakistanis are very warm and very, very, very welcoming. Hospitable. Right. They always try to help you. Absolutely. So you lived in Islamabad before moving to Lahore. So where all have you been in Pakistan? Just Islamabad and Lahore? Yes, so for far? now, yes. And because of COVID, you couldn't travel much. You didn't get an opportunity. Yes, unfortunately. Right. So have you been to the up north areas? Not yet, but I'm planning the right to. People, the right people to contact or to be in touch with. We have Anika and Ahmed with us. They own travel companies and some very nice companies. Anika, in fact, I hear that you also take these special female groups. आप ख़वातीन के भी groups खास लेके जाती हैं up north. And Ahmed, your company's been around for how long now? About 16 years now. 16 years. 2004. इतनी तो आपकी उम्र नहीं लगती. ये भी है. Actually ये company शुरू की थी मेरे भाई ने. All right. Shiraz Nasir and his best friend Qasim Khan. Shiraz Nasir passed away last year in a paragliding accident. He was an extreme sport enthusiast. And Qasim Khan is right now in Balochistan for the Jhal Maksi rally. उस पे भी हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं. Right. So it's a family business. Yeah, sort of now. So did you always see that kind of interest pouring in from abroad, from international visitors, like they were getting in touch? Because I think it's a recent phenomena, given the social media drive that we see, getting in touch is easier. But was it always like that? बिल्कुल जी. पहले पुराने ज़मानों में सिल्क रूट का भी अगर आपने सुना हो, बिल्कुल, तो वो हिपी ट्रेल भी एक थी 1970s में जो चल रही थी. तो गोरे हमेशा से आ रहे थे. जब अफगानिस्तान के भी हालात अच्छे होते थे तो वो बाय रोड काबुल से पाकिस्तान एंटर कर रहे थे. जर्मनी सारा इन्होंने हिपी ट्रेल बनाई हुई थी. तो वो बड़ा टाइम था एक. उसके बाद फिर टेररिज्म का टाइम शुरू हो गया, तो वो ख़त्म हो गया बिल्कुल ही. तो लोग जो इस टाइम के बीच में पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी वो नहीं देखा, नहीं सुना है. तो अब तो अच्छे वक्त है. Exactly. अब तो बहुत अच्छे वक्त है पाकिस्तान आने के, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के. Exactly. So Anika, your company, the Mad Hatters, I really like the name. So how did you come up with it?
I'm glad you pronounced it the Mad Hatters, because sometimes people call it the Mad Haters or the Mad Mad Hatters. Haters. You know, if somebody doesn't know, Yeah. they can come up with anything, right? Yeah, so it's actually a character from the book Alice in Wonderland. Yes, of course. And for me, that book is about a girl who goes into a rabbit hole and discovers a new world. And I believe travel is, travel does that for a lot of people. जब लोग travel करते हैं, वो नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह explore करते हैं. So it's like discovering a new world altogether. So that's what influenced the name. And when did you start this company? 4 years ago. Right, so it's been a while. I mean, it's not It's been a so while. new. No, Not so it's- new. Yeah. Right. It's been a roller coaster ride of 4 years. So Bagila, you know exactly who to get in touch with when you want to go up north. Would you like to go and visit our Of course, I've been mountains, planning to, inshallah. hills, all those areas? Yes. Have you seen some pictures? I always watch the videos. You have. So Yes. we'd like to also show you something. You know, we've created a collection of pictures from all over Pakistan and some pictures from Kazakhstan. Oh. So you'd be able to see the similarity between the two, that, you know, how beautiful both these places and how easily they can be compared. So tell me a little bit about Kazakhstan in terms of the climate, in terms of places to visit. Kazakhstan is a young country, and I can say that mostly we have a lot of mountains. So do we. And yes, which can be compared, yes, to Pakistan. Yes. And lakes, as I remember. But I haven't traveled a lot in Kazakhstan. But where were you born exactly in Kazakhstan? In Almaty. I have no idea. So It's can you explain it's that, the first capital of Kazakhstan. please? Right. Now it's Nur Sultan, but Yeah, I was reading Almaty is- something of the sort. Yes. Yes. Almaty is famous for its mountains. So you've been raised in a mountainous area. Yes. So you're very familiar with it. So how about we take a look at some of your mountains, some of our mountains, and draw a comparison here. Let's take a look at it. So we have some pictures here right now, and in those pictures you're going to see the similarities between Pakistan and Kazakhstan. Now the first thing, now as we can see, Bagila, as you were born in a mountainous area, you can see some mountains in Kazakhstan and Pakistan, and look at the similarity. Ahmed, you basically, I think, are a mountain person. Don't you think it's so similar? It is, it is. No, but I think both places Ahmed are says amazing. that our mountains are better. We'll draw another comparison. We'll get you again on the show and you can comment again, and then you can have a competition here. So I think it was so similar. I'm actually shocked. Yeah. It was so similar. So you must visit all these places, right? Yes. Right. So अभी एक वक्फा लूँगी मैं, वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि अनीका और अहमद की कंपनीज एग्जैक्टली कर क्या रही हैं, what are they about, so you have a clear understanding of both these travel companies too. So let's take a break, see you shortly right after this break. और ख़वातीन के बहुत सारे ग्रुप्स आप लेके जाती हैं अनीका? Yes. That must be fun. पेमेंट बढ़ जाती है, रोजगार उनकी भी बन रही है, तो बड़ा ज़रूरी है हम उनकी कम्युनिटी में लोगों को लेके जा रहे हैं, सो वी हैव टू गिव बैक एज वेल. हमजा तो अब एक टॉप लोकेशन है ना So पाकिस्तान that की. would be number one. वेलकम बैक टू पाकिस्तान. आप लोग जैसे लोगों को वेलकम करते हैं इधर, आई थिंक दैट्स वन रीज़न कि यहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटी में इतनी हलचल देखी जा रही है. सोशल मीडिया इंतहाई एक्टिव है, पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं. आप लोग पहले मुझे बता रहे थे बहुत सारे अमरीकी और यूरोपीय ममालिक से लोग आते हैं, और किन ममालिक से आपके पास लोग आ रहे हैं? जो मेजर चंक है वो तो यूरोप और अमेरिका से ही लोगों का आता है. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आते हैं, बट इवन ये मलेशियन, थाईलैंड से भी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं. अच्छा, वो डायरेक्ट आपको ढूंढ रहे होते हैं, यानी वो आना चाहते हैं पाकिस्तान और वो ट्रैवल कंपनीज को ढूंढ रहे होते हैं. इज दैट राइट? Yeah, so usually
एक कोई वहाँ पे भी यूजुअली कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं, देयर आर ट्रैवल कंपनीज ऑपरेटिंग इन दोज कंट्रीज जो कि यहाँ पे अपने लॉजिस्टिक्स के लिए पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं. तो वहाँ से वो ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ से उनके लॉजिस्टिक पार्टनर्स हम लोग होते हैं, एंड देन दे वर्क विद अस. राइट. और ख़वातीन के बहुत सारे ग्रुप्स आप लेके जाती हैं अनीका. Yes. दैट मस्ट बी फन. Yeah, that's a lot of fun. So actually मैंने जब ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करने से पहले भी मैंने पाकिस्तान में बहुत साल ट्रैवल किया था. इवन ये एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान के साथ भी मैं कुछ ट्रिप्स पे पहले जा चुकी हूँ. फॉर्मर क्लाइंट. इन्होंने अपनी कंपनी बना ली. ये बहुत दफ़ा हो चुका है. Okay. Yeah, so it's good, like you inspire people to do something. Exactly. Absolutely. Yeah. It's for So everyone. and also when younger people are doing this, तो देखिए एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स ले जाने होते हैं, उनको संभालना. तो उनके इंतजामात कैसे होते हैं खाने पीने के? बिकॉज देखिए ना, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे शायद इतने ज़्यादा आपको रेस्टोरेंट्स की भरमार नहीं नज़र आएगी, लॉजिंग इश्यूज होते हैं, वो कैसे मैनेज होता है? सो यू वर्क विद लोकल पार्टनर्स, क्योंकि जिन भी एरियाज़ में आपने काम करना होता है, एक तो हमारा इसमें चीज़ में भी वी रियली बिलीव टू एंगेज लोकल कम्युनिटीज़, बिकॉज दैट्स व्हाट यू फील कि यहाँ के ट्रैवल जो मोस्टली जो टूरिज्म पाकिस्तान में होता है उसमें जो एक चीज़ बहुत मिसिंग होती है, दैट्स एंगेजमेंट विद लोकल कम्युनिटीज़. लोग जाके फोर्ट्स के साथ, बॉर्डर्स के साथ सेल्फीज़ तो खींच लेते हैं, बट दे डोंट रियली फाइंड आउट कि वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, खाने कैसे खाते हैं, डांस कैसे करते हैं, कल्चर क्या है. या कल्चर क्या है. सो दैट्स समथिंग दैट्स रियली मिसिंग फ्रॉम द mass tourism space in Pakistan. अच्छा. And that's what we really focus on, कि वहाँ लोकल लोगों के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा होम स्टेज भी करवाते हैं अपने आपके trips पे. अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उधर लोकल्स के साथ जो ज़्यादा टूरिज्म वाइज हैवी एक्टिविटी जिन जगहों पे हो रही है? या क्योंकि ओवर द इयर्स हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, और हर दफ़ा जब भी बिजनेस होता है, सो इट्स अबाउट डेवलपिंग वहाँ अ की लॉन्ग टर्म लोकल रिलेशनशिप. इकोनॉमी भी कितनी बेनिफिट करती होगी आप लोगों के इन कारोबारों की वजह से. बिल्कुल जी, Right? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, रोजगार उनकी भी बन रही है, तो बड़ा ज़रूरी है हम उनकी कम्युनिटी में लोगों को लेके जा रहे हैं, सो वी हैव टू गिव बैक एज वेल. राइट. तो वरना बड़ा सेल्फिश होएगा कि हम बस. अच्छा, सबसे ज़्यादा टूरिज्म एक्टिविटी किन इलाकों में हो रही है पाकिस्तान में? KPK, GB दोनों में काफ़ी इलाके हैं, हुंजा, स्कर्दू, चित्राल, कैलाश, ये मैंने फेरी तो मेडोज. ये जब स्मार्ट लॉकडाउन जब ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ, सबसे ज़्यादा तस्वीरें फेसबुक पे देखी हैं लोगों की हुंजा की. हुंजा तो अब एक टॉप लोकेशन है ना सो पाकिस्तान दैट वुड बी नंबर वन. Hunza has really picked up in the past couple of इंटरनेशनल years. लेवल्स पे भी इंटरनेशनल देखते लेवल. हुए. अच्छा, और सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज होती हैं वो किस जगह के लिए आती हैं पाकिस्तान में? For Hunza. हुंजा, स्कर्दू भी, चित्राल भी. और उधर नए कुछ होटल्स भी बने हैं, सुना है बहुत अच्छे बिल्कुल अच्छे. बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन होटल्स हैं, बड़ा खूबसूरत टाउन्स बने हुए हैं, वेरी नाइसली स्ट्रक्चर्ड, के टूरिस्ट्स को बड़ा मज़ा आया यहाँ पे जाके. और क्या एक्टिविटीज़ उनके लिए आप उधर प्लान करते हैं? बेसिकली साइट सीइंग है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इन जगहों पे, मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, मज़ेदार ट्रेल्स हैं, सॉफ्ट ट्रेल्स भी हैं. अगर आप एक कंफर्टेबल सा लग्जरी किस्म का वेकेशन चाहते हैं तो वो भी हो सकता है विद अ नाइस होटल, नाइस व्यूज़. अगर आप फुल ऑन एडवेंचर वाला चाहते हैं, हाइकिंग करनी है, एग्जैक्टली, तो उसके लिए अलग हैं, जीप ट्रेल्स, वॉकिंग ट्रेल्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग. वो जगह इतनी खूबसूरत होती है और इतनी वास्ट और मैजेस्टिक व्यू होता है कि आपको उसको अब्जॉर्ब करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है. तो आप कभी भी जाके ये नहीं कहते कि अच्छा अब मैं क्या करूँ. बहुत कुछ है करने को. एग्जैक्टली. तो यानी अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो जी हाइकिंग हो गई, खाना पीना अच्छा आप चलेंगे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी. वैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे आप ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, Absolutely. तो इसलिए. वेल, कहते हैं कि ज़िंदगी में वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनका कारोबार या उनकी नौकरी जो भी वो काम कर रहे हो उनका अगर पैशन हो. सो इफ़ योर पैशन वो अगर आप उसका उसकी बेसिस पे उसका कोई कारोबार शुरू कर लें या वही नौकरी कर रहे हो तो उससे ज़्यादा लकी इंसान दुनिया में और कोई नहीं है. और मुझे इनको देख के यही लगता है, अनीका और अहमद को देख के, कि इनका पैशन था ट्रैवल और उसी कारोबार से मुंसलिक है. हाउ नाइस इज़ दैट. तो अनीका की कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली वो आपको कुछ चल के दिखाते हैं और फिर अहमद के बारे में भी दिखाएंगे. Well, those were some very interesting pictures
एंड बहुत ही मज़ेदार किस्म की जगह थी. दिल तो करता है कि इसी स्क्रीन के अंदर चले जाएं, आप उन जगहों पर पहुंच जाएं. बट अहमद की कंपनी एग्जैक्टली अगेन क्या करती है उसको भी चलकर देखते हैं. This was what Ahmed's company does. अहमद, आपकी कंपनी तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर करती है. ठीक नाम रखा हुआ है आपने, एडवेंचर पाकिस्तान. बस हमने कहा डायरेक्ट, कोई सवाल हो ही ना ऐसा वैसा. तो आपको तो बहुत आदत होगी कि ये जो रास्ते हैं पहाड़ी इलाके, बिल्कुल, यानी आप तो आंख बंद करके तो गाड़ी चला लेते होंगे. आंख बंद करके आपने गाड़ी नहीं उधर चलानी. ये आप मैंने भी मुहावरा इस्तेमाल किया. बिल्कुल. मगर बस कुछ रास्ते अभी भी ख़राब है, मगर ज़्यादातर बड़े अच्छी रोडें बन चुकी हैं, so it's not a problem. So what would you recommend to Bagila here? Where should she go? She hasn't been to any of these places. Keeping in mind that she has a similar landscape, मगर obviously difference है. तो अगर आपने north देखना है, I think you should go for Hunza, Skardu, and Kailash, which is in Chitral. So Kailash when you're going back, you're going to tell that to your husband, right? That these are the places that we need to visit. Actually, I wanted to mention that I have a small blog on Instagram which I've been running, and it's mostly about Pakistan culture, about the traditions, and it's for Russian audience because. And what kind of a response are you getting there? Very good. They're so much surprised to see that the life here. Mostly in stories, I show a lot of places, and I write a lot of. Regularly I write posts about the clothing here, how people lifestyle here. So. And what about the food? What's your favorite? Exactly, I give I do the videos with the food. Are you cooking Pakistani yes, food? I can here? cook. You do. What Yes, do you I cook? do. What have you tried mainly? I make mostly chicken biryani. Wow. Before I used to make honey. You can do that. Yes. Excellent. And how did you learn that? On YouTube? You With just my got the husband recipe? and YouTube. Yes. So, and you do a good job. So we got to try that someday. Yes, inshallah. So you do biryani, and what else can you cook? Chicken karai. So you do most of our main yes. dishes. That's very nice. And it wasn't difficult for you to learn, was it? At first, yes, it was, but after I learned some words from the videos in Urdu, then it went easier. So when you go to the marketplace in Lahore, is it difficult for you to communicate with people? No, not that much. I mean, I can you explain. manage to explain them what Yes. you want or what you need. And I can understand what they're asking as well. But you do understand Urdu. You were telling me that you can't speak Urdu fluently, Yes. but you do understand Yes, Urdu. and I can explain a little bit. You can. I try.
So what have you learned so far in Urdu? I don't know, mostly like I cannot speak, but when they speak, I can respond. All right. That's So if this. somebody was to ask you, "Kya haal hai?" Do you know what that means? Yes, I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Oh, so you do understand that. That's good enough. That's good enough. Absolutely. Well, वक्त ही कमी है, वरना हम इस डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू रखते। बैगलिया से हमने आज बहुत कुछ इनके मुल्क के बारे में जाना है एंड वी होप दैट यू एन्जॉयड दैट। और साथ में जो ट्रैवल कंपनीज जिस तरह से ग्रो कर रही हैं पाकिस्तान में, जितने ज़्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं, पीपल लाइक अनीका एंड अहमद और ऐसे बहुत सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ये उन इलाकों की जहाँ पे टूरिज़म एक्टिविटी ज़्यादा है पाकिस्तान की, उनकी लोकल इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं, बल्कि बाहर की दुनिया को दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। वेल, थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग इन। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और नई एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिएगा और आप देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान।